ओह बहुत मज़ा आ गया यार यहाँ पे स्विमिंग करके। पैंट अभी गीले हैं पर होपफुली सूख जाएंगे जल्दी। Welcome to another day in Goa, and today we are going to go at Dudhsagar. पानी चल रहा था 12 महीने पूरा 12 महीना मतलब वो कोई रिवर से आता है क्या? हाँ ऊपर रिवर कर्नाटक से आता है। कर्नाटक से। अच्छा अच्छा सही। उसे देखा दीजिए कोई। This waterfall is so awesome, as you can see. The place where they shot Chennai Express shot. You can see that railway line up there. The same scene as Chennai Express.
It was fun swimming here. बहुत मज़ा आ गया यार यहाँ पे स्विमिंग करके. पैंट अभी गीले हैं पर होपफुली सूख जाएंगे जल्दी. This is such a beautiful place, right? Sir? Yes. सिर्फ वन. Definitely visit, and yes, do swim in the waterfall right there. Yeah, just we got just 1.5 hour और वो काफ़ी नहीं है खाना. And you get 1.5 hour, and yes, the time to reach here is about an hour, like 50 to 1 hour. But after that you get 1.5 hour. So And the water is super cold. तो एटलीस्ट 3-4 घंटा हाथ में लेके आना. और हाँ, आते वक्त भी रास्ते पे भी 2-3 घंटा लगता है. 2 घंटा पकड़ के चलो. Wherever you stay. तो अभी हम रिटर्न जा रहे हैं टू आवर प्लेस. आफ्टर अ वंडरफुल डे एट दूधसागर हम अपने रूम में वापस आ गए हैं एंड वी हैव रेंटेड 3 स्कूटीज़. सो भी रेडी होके हम निकलेंगे ना. लेट्स गो. वन मोर थिंग, वी आर गोइंग टू कोलवा बीच. तो देखते हैं कैसा है. I can see what we are, don't know where we belong. Wanna know what you're thinking, wanna know if something's missing. Started stories before, but they ended up short. Get me up to higher places, want you to fill my pages. Is this for real or is it just a fantasy? Are we from now or is it really meant to be? Are you still in my arms when we've read out all the parts of this story? और लास्ट बीच ऑफ गोवा, कोलवा बीच. अब तो हम लोग स्कूटी से आए हैं तो और मज़ा आया चलाने में. नाइस रोड्स, वेरी नाइस रोड्स. Will I still be in your heart in this story? Are you still in my arms when we've read out all the parts of this story? Far past the epilogue, will I still be in your heart in this story? सो फाइनली ट्रिप केम टू एन एंड. हाँ सिस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा. बट वी मिस द कोलवा बीच एक्टिविटीज. नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम या. बट द दूधसागर फॉल्स या दूधसागर तो बहुत सही था भाई. बहुत सही था. रास्ता भी बहुत सही था. 1 घंटा पूरा बुम्पी राइड. इवन यू कैन ट्रैक ओवर देयर. यस, यू कैन ट्रैक. बियर ग्रिल्स जैसा एक्सपीरियंस आएगा. तो 2 दिन गोवा काफ़ी अच्छा रहा. वी एंजॉयड आवरसेल्व्स.
So And this villa is also quite fantabulous, you can say. You can make your own food, and you have 3 rooms. You can do anything with it, literally Yep. anything. And the neighborhood is quite safe. There is security guard. Second, it's super serene and quiet. बहुत ही अच्छा नेबरहुड है, पर आजू बाजू में कुछ मिलेगा नहीं. यू हैव टू गो मडगांव फॉर दैट. Yeah, even like if you want to have कुछ खाने का है तो फ़ोन कर देना, वो लोग फूड डिलीवरी दे देते हैं. One is their country shade. The person was nice. Country shade, no? या Yesterday one the country shade. खाना वाना सब पहुंचा देता है. And like, और हाँ, मडगांव का जो मार्केट है, no, the fish market, the chicken market, it बहुत was सही है so वो. clean. It was so clean. Even you have a separate counter for a fish cutter and a cleaner. And itself you can sit on the floor and eat in fish market. या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है. दैट इज़ अ गुड थिंग. And even the fish is quite delicious, I guess. हाँ, इफ़ यू कम हियर देन डू विजिट दैट मार्केट. Yeah. लाइक इफ़ यू ईट नॉन वेज. Fish specifically, I don't prefer much. एनीवेज, But the chicken was nice. That chicken zakuti. या जकूटी. Chicken zakuti. It's their local cuisine. Chicken zakuti. They give curry leaves and all, like a thick gravy. It's nice actually. Anyways, so if you like this vlog, then do hit that like button, then share and subscribe for more. See you in my next destination. Goodbye.